तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारे आइन, हमारे दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का प्रीएम्बल क्या कहता है। हम इसको पढ़ते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम आगे चल के देखेंगे कि इसका आर्टिकल 1 क्या कहेगा, 2 क्या कहेगा एंड सो ऑन। हम पूरे दस्तूर को इंशाअल्लाह 1 बाय 1 जिक्र करेंगे। तो प्रीएम्बल को देख लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्रीएम्बल कहता है, अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा, उर्दू में इसके साथ साथ इंशाअल्लाह आगे चल के तशरीह करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे मिलके कि प्रीएम्बल दस्तूर का कहता क्या है हमारे। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him in a sacred trust, and whereas it's will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah, wherein adequate provisions shall be made for the minorities feeling freely to profess and practice their religious and develop their cultures, wherein the territories now included or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form the federation, wherein the unit will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed, wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality, wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backwards and depressed classes, wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, wherein the integrity of territories of the Federation in independence and all its rights, including its sovereign rights on land, sea and air, shall be safeguarded, so that the people of Pakistan may prosper and attain the rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. Now, therefore, we the people of Pakistan, conscious of our responsibility before Almighty Allah and men, cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, dedicated to the preservation of democracy, achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order, do hereby
through our representatives in the National Assembly, adopt, enact, and give to ourselves the Constitution. ख़वातीन हज़रात, ये है प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बताया गया कि हमने इसमें बसने वालों के लिए मुसलमानों का जो मेजॉरिटी में है उनको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, और जो माइनॉरिटी हैं उनके हुकूक क्या हैं और हमने किस तरह से चलना है। दीन इस्लाम हमारी रियासत का दीन होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो डिक्लेरेशन 23 मार्च 1940 को लाहौर में डिक्लेयर किया था, उस डिक्लेरेशन के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, प्रियम्बल के हवाले से हम ज़रा तफसील से बात करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम आर्टिकल 1 से ऑनवर्ड फिर शुरू होंगे। तो आज प्रियम्बल के ऊपर बात की, हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमारा ये पहला लेसन, पहला दर्स या पहली एपिसोड इंशाअल्लाह आपके। थैंक यू।